Hello viewers, the question is, in half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? What is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? So the problem is based on the topic rectifier. Now in a rectifier there is an input waveform and there is output waveform. For a half wave rectifier, suppose this is the input waveform, the output waveform looks something like this. So if you see these two waveforms, if you compare to these two waveforms, then the frequency is same. Frequency is same for both these signals. For example, this is having a frequency of 50 Hz. Then for the half wave rectifier, the frequency is also 50 Hz. So the first part of the answer, that is the frequency of half wave rectifier output, is equal to 50 Hz, which is same as the input frequency. Now if you see the output waveform for the full wave rectifier, the frequency is doubled because in a certain time there are two ripples here. So the frequency is two times. So we can say that if the input frequency is 50 Hz, then the output frequency for the full wave rectifier is 100 Hz. The output frequency of the full wave rectifier in this case is 100 Hz. So this is the answer of the second part of this problem. Frequency of full wave rectifier output is equal to 100 Hz. तो प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और अगर इसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर लिया जाए तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनपुट सिग्नल की 50 हर्ट्ज, जैसे कि हम वेवफॉर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की क्लियरली शो करती है कि जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की वो सेम होगी फ्रीक्वेंसी इनपुट के, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट की 50 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट भी जो है 50 हर्ट्ज ही होगी। अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की तो हम साफ साफ देख सकते हैं दैट द फ्रीक्वेंसी इज डबल। फ्रीक्वेंसी जो है टू टाइम्स है विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे अगर इनपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। सो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 100 हर्ट्ज। So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.